Hello guys and welcome back to Excelsior Academy. Sorry for the delay in the lecture series. So let's continue without any further delay. So today's lecture number 9 from cell renewal and cell death as part of Cooper summary series. So today we are going to talk about the caspases. So in the previous lecture we talked about the apoptosis. I know बहुत ही कम हमने discuss किया apoptosis के बारे में. But don't worry guys, I'll be taking separately a complete detailed explanation and presentation based on the apoptosis. ठीक है, पूरा उसमें apoptosis की details रहेगी. Since I'm covering the Cooper और Cooper में जितना दिया गया है मैं उतना ले रही थी, but I myself felt that कि apoptosis थोड़ा कम रह गया है उसमें, हमें और डिटेल में पढ़ना चाहिए. So let's complete this series. Let's complete this chapter from the Cooper and then we can go to the apoptosis. Okay, so in this lecture we are going to discuss about the caspases and they are the executioner of the apoptosis. यानी कि कौन फांसी का फंदा खींचने वाला कौन है? Caspases है, ठीक है. So molecular cloning and nucleotide sequencing of the SET3 gene. So SET3 हमने कहाँ पढ़ा था? C elegans में, ठीक है, C elegans death gene में. It indicated that it encode a proteases. So from this we got the first insight into the molecular mechanism of apoptosis. यानी कि हमें पता चला कि apoptosis को execute करने वाला जो main बंदा है वो हमारे caspases हैं. And these caspases are nothing but the proteases. And proteases भी कौन से? आपके specific. Okay, so they are going to be very specific because they have got the cysteine residues at their active sites and they cleave after aspartic acid in their substrate proteins. ठीक है, so guys ये बहुत important है. इस स्लाइड में अगर आपको टेक अवे मैसेज जो लेना है वो ये लेना है that caspases have got the cysteine in the active site and they cleave after the aspartic acid residues in the substrate proteins. Please guys इसको याद रख लो. नहीं याद हो रहा, नहीं समझ रहे तो रट लो. This is very very important. ठीक है, this point is very important. Now, so these caspases are the ultimate effectors or the executioners of the programmed cell death, bringing about the events of apoptosis by cleaving more than 100 different target proteins. Guys, this is really very important and if possible, I will be sharing the video also in which you can see the entire apoptosis process. ठीक है, मुझे मालूम है जितना हम वीडियो देखते हैं उतना ज्यादा हमें क्लियर होता है. Okay. So this is about the caspases. So उनके क्या क्या काम है? So what are their targets? So they are the inhibitor of DNases because it is going to lead to the DNA fragmentation, nuclear lamins, cytoskeleton proteins, Golgi, matrix proteins, and scramblase. ठीक है, so we know that these are the 100 different cellular proteins which can induce the morphological changes in the apoptosis. So the caspase target include an inhibitor of DNase, nuclear lamins, cytoskeleton proteins, Golgi matrix proteins, and a scramblase that promotes translocation of the phosphatidyl serine to the outer leaflet of the plasma membrane. So आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से apoptosis को carry out करने के लिए ये सारे changes continue होते हैं. For example, like how do you detect or how do you understand that particular cell is undergoing apoptosis? By checking the presence of the phosphatidyl serine on the outer membrane of the cell. So we know that these PS, phosphatidyl serine, is present in the inner leaflet of the plasma membrane. पर अगर वो cell apoptosis के लिए जा रहा है, so then you can see that this scramblase is going to bring the phosphatidyl serine to the outer membrane. So we have discussed this with the help of the diagram also in the previous lecture. थोड़ा सा अगर doubt है तो आप पीछे जा सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, ठीक है? Now, so the key target DNA क्यों है? Because see, we know that in the case of the apoptosis, the moment cell undergoes apoptosis, it starts actually DNA fragmentation. ठीक है? Now, why DNA fragmentation? अगर आपको याद है, so we have discussed that apoptotic bodies बनते हैं, तो छोटे छोटे से ना ऐसे सेल के अंदर apoptotic bodies बनते हैं. So these DNA also gets fragmented completely. Now it also cleaves nuclear lamins. Nuclear lamins कहाँ present आपके nucleus में, right? Nuclear membrane में. So they actually these lamins are nothing but your intermediate filaments, right? Lamin A, B, C अगर आपको याद है तो. So these lamins are actually the structures which is helping to hold the nucleus. अब जब आपका DNA ही पूरा fragment हो रहा है तो nucleus को रख के क्या फायदा? So nucleus also starts getting fragmented. तो इसलिए क्या होता है? Caspase क्या करता है? Nuclear lamins को cleave करना शुरू कर देता है. And finally it leads to the fragmentation of the nucleus.
Now धीरे धीरे cytoskeleton proteins also, you have got cytoskeleton proteins like MT microtubules are there, IF is there, then you have got the actin filaments are there. So these all are the cytoskeleton proteins. इनका काम क्या है, पूरे सेल को बना के रखने का, ठीक है. बट जब पूरे सेल ही हम फ्रैगमेंट करने जा रहे हैं तो we don't need these proteins, and to break the entire cell into small small bodies we need to break these cytoskeleton proteins also, ठीक है. So finally, blebbing of the plasma membrane and cell fragmentation starts. So कैसे होगा? So if you have got the cell like this, धीरे धीरे it starts forming the ऐसे apoptotic bodies. ठीक है? Now, what happens later? These apoptotic bodies will be then recognized by the macrophages and they will be taken and engulfed, fused with the lysosomes, and जो भी subcellular contents होंगे जैसे कि आपके proteins हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, और ये कंपोनेंट्स जो होंगे वो बाद में रिसाइकल हो जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हुआ है हमारा. Then they also cleave and activate scramblase Q because it is going to translocate phosphatidylserine from the inner to outer. So we know that ऐसा अगर plasma membrane है, this is inner side and outer side. तो इनर साइड में आपका फॉस्फेटिडिलसेरिन रहता है एंड यहाँ पे आपका फॉस्फेटिडिलकोलिन एंड इथेनोलामिन रहता है, राइट. इथेनोलामिन भी नीचे ही रहता है. हाँ, यहाँ पे आपका फॉस्फेटिडिलकोलिन एंड स्पिंगोमाइलिन रहता है. बाकी फॉस्फेटिडिलसेरिन, इथेनोलामिन, आइनोसिटोल आपका इनर में रहता है. नाउ इन द केस द सेल एक मार्कर की तरह काम करता है आपका फॉस्फेटिडिलसेरिन, ठीक है. तो जैसे ही स्क्रैम्बलेस एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, इस पीएस को फ्लिप करके आउटर मेम्ब्रेन में कर देगा, ठीक है. देन आउटर मेम्ब्रेन में आपका पीएस एक्सपोज हो जाता है विच इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द other cells and then the entire thing will be digested by the macrophages, ठीक है. तो इस तरह से आपका प्रोसीजर होता है एपोप्टोसिस का, और इससे क्या है, no other toxins will be released into the extracellular matrix, that is the other cells are not being disturbed because of the death of one particular cell, ठीक है. Whereas we know about the necrosis. Necrosis में क्या है, it is the sudden or the wound or the injury to the cell, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो आपका बाहर रिलीज हो जाएगा. एंड समटाइम्स दे आल्सो हैव गॉट द लाइसोसोम्स एंड द टॉक्सिन्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है. सो व्हेन दैट इज रिलीज इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, क्या होगा, नेबरिंग सेल्स थोड़ा इफेक्ट हो जाते हैं. सो इट इज गोइंग टू स्प्रेड. अगर वो डिसीज्ड सेल था या कैंसरस सेल था, so what will happen, all these toxins will be spread to the other cells and nearby cells are also going to get affected, ठीक है. Okay. So SET3 is the only caspase in C. elegans, जबकि Drosophila and mammals contain different families. Okay, sorry, not different families, from the same family. Around 7 to 8 caspases are there, which is going to function in the cascade to bring about the events of the apoptosis. So there, of course, they are synthesized at the inactive precursor. तो now अगर आपसे ये पूछा जाए क्यों हर बार प्रोटीन इनएक्टिव पहले प्रोड्यूस होता है एंड देन ओनली with the help of the series of events it's become activated. So obviously बात है, you can tell your to the person whoever is asking, जिस तरह से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके इनएक्टिव पहले होते हैं उसके बाद ही एक्टिव होते हैं. Otherwise, what will happen if suppose they are always active and if suppose foods are not available that time, what will happen? It will start digesting your stomach lining, ठीक है. उसी तरह से अगर कैस्पेस हमेशा एक्टिव ही प्रेजेंट रहेंगे, so it is going to bring all the cells to the apoptosis, जबकि हमें वो नहीं चाहिए, राइट. सो व्हेन वी आर सेइंग कि ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, तो हमेशा कैस्पेस एक्टिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सारे सेल की डेथ हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए. Ultimately the organism is going to die then, right? And that's why they are released into the what do you say, the procaspases, that is the inactive form. और जब भी signal activate होता है कि yes this particular cell has undergone certain events which cannot be repaired and it should undergo apoptosis, then only these caspases gets active by the proteolytic cleavage, ठीक है. Now initiatory caspases are activated directly in response to the various signals that induce the apoptosis, as we are going to discuss in this chapter. The initiatory caspases then cleave and activate the effector caspases, which are responsible for digesting the cellular target proteins and mediate the events of the apoptosis. So what will happen once the caspases gets activated? It is going to bring about the death of the cells. Okay.
So हमें पता चला है SET4 going to act is the activator of SET3. So this we have discussed already कि SET4 SET3 क्यों करता है और SET9 इसको inhibit करता है, ठीक है. So guys, that's all about for today's class. I hope you like the video because this is going to become more interesting in the upcoming lectures. I'm going to share the video how exactly these caspases are, activating each other and bringing about the apoptosis. So till then, take care.